Good morning, everyone. We will wait for a few seconds so that I can add other students also. Okay, guys. Students are getting added. I would request you to please mute your audio so that you can listen to my voice very clearly, right? So this is one set of instructions that you need to follow, that you have to mute yourself. See, I can also mute you from here, from my portal, but I would ask you to mute yourself so that whenever that you want to speak, or whenever that you will have any doubt, you can unmute yourself and you can ask your doubt. But in between, you are not supposed to speak during the session. Okay, so I think everybody is aware that this Zoom session, this Zoom cloud meeting I'm conducting so that we can have a face to face interaction with each other. I have not taught you till 10th, right? So we don't know each other. So it is very important that we meet face to face. But since due to the lockdown, this is not possible right now. So let's have a class, face to face class using Zoom. Okay, now the point is that I can see a lot of students who have not written their original names. Like I can see user, Android, iPhone, or something, right? I want you to use your original name so that this can be used for taking the attendance, right? You have the option of changing your name after entering, or you can do it before entering also, right? So I would like you to join in from tomorrow by using your original name, right? So that is very important. Okay. Next thing would be that you all have to sit with the register in place, and everybody, please switch off your video, your front camera video, so that when you'll be asking question, then you can switch it on, right? Otherwise it will give a lot of pressure on the net and we might disconnect. So I would ask you to please switch off your camera. The moment you want to ask anything, please switch it on and then you can ask your question. Okay, I think all my instructions are very much clear to you. So one once we are getting a bigger strength, let's start there. Okay, we have a strength of almost 45 or 47 student, if I am not mistaken, right? But if I can see right now, there are only 30 participants to the meeting. So that means the number of participants that we are attending, that are attending today, is less. So let me instruct you, let me guide you again, that it is important for us to attend these online classes so that this can be used for marking our attendance, and it is important. So everyone, please be present for attending your classes instead of taking notes from somebody else. Okay, so let's start with the class today. We have to start with the basic theoretical knowledge or theoretical base of accounting. So let's start with what is accounting. जैसा मैंने आपको कल भी बताया था मेरे अपने छोटे से वीडियो ऑडियो नोट में, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ that what is accounting. So I will be sharing my screen and I want an update that if there is anyone who is unable to see the screen. Okay, I think everybody can see the screen now. Yes? Okay. Yes, ma'am. So since everybody can view the screen, so we will be using this screen, and if you will have any doubt, you can write your doubt in the chat box, right? So you can write your doubt or you can unmute yourself and can ask your question. So let's start with what is accounting. So like I told you yesterday, like we discussed, that accounting is an art or it is a मेरी process. क्लास शुरू कर Now, when we say accounting is a process, why am I calling it a process?
प्रोसेस इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर जो हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग एक सिस्टम, एक पूरे सीक्वेंस को फॉलो करता है, और वो सीक्वेंस हमारा क्या है? वो सीक्वेंस हमारा है, वी स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सो लेट मी टेक यू फर्दर. Okay. So when we talk about accounting, so accounting, this is the accounting cycle that you all can see. So now accounting, it starts with identification of transaction. Accounting हमको इसीलिए करनी जरूरी होती है because without accounting we cannot determine कि हम जो business कर रहे हैं उसका end result by the end of the year, what is it resulting into? That means is it resulting into profit or loss, right? So it is very important for us to know that we do accounting, we undertake accounting process, and we make all the accounts so as to determine our profit or loss which we have earned or incurred by the end of the year. Okay, so this is for the reason why we are doing accounting. Now accounting, it starts because I said that accounting is a process. So accounting starts with identification. Look at the first point, identification. So identification of what we are doing, we are identifying the financial transaction. That means every transaction which is of financial nature, यानी कि जिस transaction के अंदर money या money related कोई भी aspect use होता है, हम उसको अपने accounts यानी कि अपनी book of accounts में record करते हैं, right? So anything like if I say uh, a student in your class is very honest, is very punctual, this is a trait which that student is possessing. तो वो क्योंकि punctual है, क्योंकि honest है, इसीलिए वो बेहतर काम करेगा. He'll be more productive to us. But this honesty cannot be recorded in the books. But उसके honest होने से या punctual होने से हमको कितना benefit हो रहा है organization में. That means what is the return that we are receiving. This is called the monetary value, right? तो जो भी transaction हम अपने accounts में record करते हैं, that has to be monetary in nature. एक और example से समझते हैं. If I am purchasing a land, right? तो land मैंने मान लेते हैं 1 acre land खरीदी और उसके लिए मुझे 1 crore rupees cost pay करनी पड़ी, amount pay करना पड़ा. So हम जो record करेंगे, we will be recording the value of land as 1 crore. 1 एकड़ जो मैंने खरीदा है उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने नरेशन में करते हैं, मतलब हम उसके डिटेल्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं. बट जो अकाउंट्स में मैटर करेगा वो मैटर करेगा दैट वी हैव परचेज्ड अ लैंड वर्थ ₹1 crore. So this is identification. That means everything which is of financial nature is required to be recorded, right? So first is identify the transactions are financial in nature. The second point is that we are going to follow in the process of accounting is recording. So in recording, we have to record all those financial transactions which we have already identified. हमने first step के अंदर identify किया. Now in second step we are going to record it. Record करने का मतलब होता है लिखना. जैसे आपको ये पता चल गया कि मैंने लैंड खरीदी है, उसकी वैल्यू 1 crore rupees थी. So now you record it in the journal or subsidiary books, or we may prepare both, right? So the point is recording के लिए जो हम books use करते हैं accountancy में उसको journal या subsidiary book कहा जाता है, और journal और subsidiary book अलग अलग होते हैं, right? So when we say we are recording in journal, so journal is basically our day book. Day book का मतलब होता है कि हर दिन जितनी ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही है उन सारी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे एक ही जगह पे, राइट? तो अगर मैं कहूँ कि आज मेरी डेट है 11th अप्रैल, राइट? तो 11th अप्रैल को कितनी ट्रांजैक्शन हुई? मान लेते हैं 20 ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक दिन के अंदर. तो वो 20 ट्रांजैक्शंस जो आपकी फाइनेंशियल नेचर की थी, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस में मनी
का की मनी की वैल्यू थी, वो सारी ट्रांजैक्शंस आप एक एक करके उसी दिन 11th ऑफ अप्रैल को रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट, विदाउट गिविंग any other gap. That means it will be recorded in the order in which they are taking place. So if I say 11th को मेरी 10 ट्रांजैक्शन हुई, मैंने 11th को रिकॉर्ड कर ली, then 12th को 10 ट्रांजैक्शन हुई, मैं 12th अप्रैल को 10 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगी, keeping only the date factor in mind. That means based on the date, if a transaction is monetary, I will be recording it in journal, which is called my day book. Next part in the process or next step in the process is classifying, right? तो जैसा मैंने कल बताया था आपको, वैसे ही मैं आपको आज भी रिपीट कर रही हूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, आप जर्नल बना रहे थे डेट वाइज। दैट मीन्स 11th को क्या ट्रांजैक्शन हुई, 12th को क्या ट्रांजैक्शन हुई, 13, 14, 15, ऐसे आपने पूरे साल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं। Now, whatever that we have recorded, it is assumed that we have recorded all the transactions which are of monetary nature, right? So now we have to classify it. जब हम classify करेंगे, हम उसे classify करेंगे ledger में. So ledger is a secondary book. Journal कहलाती है आपकी primary book, which is also called as day book or book of prime entry. Ledger is called our secondary book. तो लेजर का मतलब हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की थी डेट वाइज, नाउ यू क्लासिफाई देम, नाउ यू ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर नेचर. सो ग्रुपिंग मींस जो जिस नेचर का ट्रांजैक्शन होगा उसको आप एक साथ क्लब करिए. जैसे अगर मैं कहूँ कि जितने ट्रांजैक्शंस में कैश आया है, राइट, like if I am selling the a product in which I am dealing, so cash is going to come in. So all the transactions which is resulting into inflow of cash is going to be added at one place, right? Similarly, the transactions which are resulting into the outflow of cash, that means the cash is moving out. जैसे अगर मैंने purchase किया land तो cash गया है, right? मैंने purchase किया raw material तो cash गया, right? So for all those transactions which is resulting into the movement of cash outside, that is outflow of cash, so it is to be grouped at one place. तो ये जो आप grouping कर रहे हैं एक ही nature के basis पे, that is to be done in our secondary book, which is also called the book of accounts, ledger, right? So this is our third step in the process. Fourth step is summarizing. समराइजिंग का मतलब होता है कि जो भी सारे ट्रांजैक्शंस आपने नेचर के बेस पे क्लासिफाई किया था अपने लेजर अकाउंट्स में, अब आप उसे क्लब कीजिए. क्लब कैसे करेंगे? क्लब करने का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि कैश अकाउंट वाज वन ऑफ द अकाउंट व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड इन लेजर, तो कैश का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, राइट? दैट मींस इज इट ऑन द इंक्रीजिंग साइड और इज इट ऑन द डिक्रीजिंग साइड? तो जिस भी साइड वो रहेगा, जब मैं उस बैलेंस को रिकॉर्ड करूंगी, और इसी तरह से हर क्लासिफिकेशन को आप एक साथ, जो भी जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं लेजर में, उसको आप एक साथ रिकॉर्ड करते हैं इन अ समरी स्टेटमेंट that is called trial balance. So trial balance is basically your summary statement, right? इसके बारे में ये कैसे बनता है और इसका क्या फॉर्मेट रहता है, क्या रूल्स होते हैं, ये सब चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग, when we are studying accounting is a process, so we are studying that why accounting is treated as a process. That means what is the process of accounting, right? Okay, so after summarizing, the next step is analysis and interpretation. एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया था, दैट फाइनल अकाउंट्स मीन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दैट मींस वी प्रिपेयर आवर फाइनल अकाउंट्स सो एज टू डिटरमाइन कि हमको साल के एंड होने पे, जब साल हमारा कंप्लीट हो रहा है, so what are we incurring? Are we incurring loss or are we earning profit? ये मुझे पता चलेगा मेरे फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू
understand. Next is interpretation. इंटरप्रिटेशन इस साल हमको नहीं करना है, हम सिर्फ फाइनल अकाउंट्स तक ही करेंगे, यही हमारा 11th का सिलेबस है, राइट। इंटरप्रिटेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आप पढ़ने वाले हैं 12th में, मगर मैं आपको ओवरव्यू से समझा देती हूँ that interpretation basically means that we have to find out or draw the conclusion कि ये जो हमको प्रॉफिट मिला है इसका एक्चुअली मतलब क्या है। दैट मीन्स whatever is the result of an organization by the end of the year, what does it actually mean? Is it showing growth? Is it showing survival? Is it showing profit? Is it showing just the recovery status? So what is it actually representing? That is called our interpretation. Interpretation के लिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ratio analysis, vertical, horizontal analysis, these are basically the tools which we are going to use for interpretation. Now, last point, which is the most important point, is communication. जो भी आप accounts बनाते हैं, this is not only prepared for our own purpose, but this is prepared for the purpose of communicating. That means the accounts are required to be communicated to the parties interested. Okay, let me take an example. आप बिजनेसमैन है, आपने बिजनेस को शुरू किया, so you are the owner. You will be interested in knowing the results, how the business is performing, because आपको ये पता चलेगा उससे कि जो आपने पूरे साल ट्रांजैक्शंस किए, जो पूरे साल काम किया, उससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट। तो ये जानने के लिए आप बहुत इंतजार करते हैं, तो you are the owner because you are the one who is going to bear the risk of doing the business. So this is communication, right? ओनर तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी होती है, उसके अलावा एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? बिकॉज एम्प्लॉयज जानना चाहेंगे कि अगर बिजनेस प्रॉफिट में है, सो देयर सैलरी कैन इंक्रीज, राइट, दे मे गेट बोनस, right? But if the business losses, so they might also not receive the salary, right? So this is very important for us to understand whether our business is running into profit or loss. इसी तरह से हमारी और भी parties होती हैं which are interested into knowing the financial information, which we will study in the separate topic. Right now, get back to the meaning of our accounting. So accounting, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, that accounting is a process. So like we were discussing that accounting is a process, it is an art. So art इसको इसलिए कहा जाता है because accounts के अंदर जो भी आप कर रहे हैं वो एक rules के according कर रहे हैं. That means everything has its own rule, but still you have this option of using your own ways and methods. That means you are going to record it in your own ways. So there is a possibility of that creativity, that innovation can be included. So it is an art also, right? So accounting is an art, or slash करके यहाँ पे process भी लिख सकते हैं, of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money. So significant manner, that means all the process, all the steps in the process are to be taken care of as in the way in which it is written. तो आप recording, जैसे पहला step है अगर identification, next है recording, then next classifying, then summarizing, analysis, interpretation, communication. तो ये एक sequence है, ये sequence आप change नहीं करेंगे, right? ये sequence वैसा ही चलेगा. So this is the same manner which you are going to prepare your accounts in. And in terms of money, so money is very important. So you'll be recording all your transaction only which are dealing or which are related in money or which are expressed in terms of money. Transaction and events which are in part at least of financial character. That means again it has to be taken care of that all the transaction should be of financial nature. अगर कोई भी चीज आपकी financial nature की नहीं है, money related नहीं है, then it is not going to find a place in accounting. And interpreting therefore drawing the conclusion and communicating it to the parties interested. So this is what accounting is, right?
So this is the next is characteristic of accounting. Anybody having any doubt in what is accounting? You can raise your question if anybody has any doubt in the process, in the meaning of accounting and the accounting cycle. Anybody? Okay. So I think nobody has any doubt. So let's move further. So let's start with characteristics of accounting. So मैंने आपको बताया accounting की पहली characteristic है accounting is an art as well as a science. Okay. Before moving to the characteristic, मुझे बताइए आप लोगों के पास NCERT आप डाउनलोड कर सकते हैं. So should I mail it to you, the NCERT book, or can you download it from CBSE? Yes. Can you all do it? Okay. Since I am not receiving any response, I think you should be able to do it, because downloading of the NCERT book would not be that tough. Why am I asking you to download it? Because that everybody has an access to the net, so you can do it by yourself, right? If in case anybody will have any issues with the downloading part, I will mail it, but I want you to start it off first and please download it. थियोरिटिकल सेगमेंट जो भी, जब तक देखिए हम एनसीईआरटी को रेफर नहीं करते हैं अकाउंट्स पढ़ने के लिए, वी आर गोइंग टू यूज डीके गोयल, राइट? बट क्योंकि अभी स्कूल फंक्शन नहीं कर रहा और आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, सो द ओनली एक्सेस which you have right now for the book is NCERT. So let's refer to it so that at least जो भी आपका थ्योरी में आपको पढ़ा रही हूँ, उसका डिटेल्ड वर्जन आपको आपकी बुक में अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप एक बार रीड करेंगे, then you read again, and if there will be any doubt, we will be resolving your doubts, right? So please download NCERT book today, today itself. Okay, so we have got some more doubt, so you can always write it in the chat box, or probably you can ask your doubt by unmuting yourself, right? So okay, the next thing is that we are going to start today is characteristics of accounts. So characteristics of accounting is basically, the first point is accounting is an art as well as science. So accounting is treated as an art because there we can use our own creativity. Creativity मतलब हमको rule के against नहीं जाना है, but whatever parameter or whatever things, whatever rules that has been provided to us, we have got this option to choose between the number of ways which are provided, right? तो जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अकाउंट्स बनाने के लिए we have certain systems which are like I'll say cash basis, accrual basis, तो उसके अंदर आप ऑप्शन रख सकते हैं कि आपको कौन से बेसिस से अकाउंट्स बनानी है, मगर इसके अलावा जो तरीका है अकाउंट्स बनाने का वो आपका शिफ्ट नहीं करता है. ओके, we have got one doubt, let me answer that doubt. Ma'am, can we download PDF of DK Goel instead of NCERT? See, I don't think so कि PDF DK Goel का available है, पर अगर available है, I would suggest that don't even download it alone, download it and provide it to your class also, right? Because I don't think so that everybody would be able to find the PDF of DK Goel, but if anybody of you can manage the PDF of DK Goel, it will be a wonderful thing. Please download it and provide it on the common accounts group to the other students also, right? Do not keep the resource with your own self, right? So this is a humble request that I'm posting to you. Okay, next is accounting is an art as well as science. तो मैंने art का segment बताया आपको, science में बताती हूँ. जैसे कि science में हम कहते हैं that science is has a systematized body of knowledge. That means साइंस के लिए जैसे अगर मैं देखूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं 10th में अभी, तो साइंस के लिए ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल था, मतलब मटेरियल अवेलेबल था जिसको आप रेफर करके आपने साइंस को स्टडी किया. और जो साइंस आप जैसी यहाँ स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड या थ्रू आउट द यूनिवर्स वो वैसे ही पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है, राइट? तो साइंस की एक अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. सिमिलरली अकाउंटिंग की भी अपनी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है. दैट मीन्स अकाउंटिंग के लिए भी देयर आर रूल्स, देयर आर नॉर्म्स, there are ways, there are formats which has already been defined
तो आपको उसी को फॉलो करके अकाउंट्स बनाना होता है। हालांकि अकाउंट्स थ्रू आउट द ग्लोब एक तरीके से नहीं बनता, राइट? जैसे अकाउंट्स जो हम इंडियन बनाते हैं, इंडियन कंपनीज बनाती हैं, वो पहले यूज कर रही थी IAS पे, दैट मींस जिसको हम कहते हैं विच इज कॉल्ड Indian Accounting Standard, right? So Indian Accounting Standard is the standard which we were following to make our accounts, right? मगर अभी हम अगर देखेंगे, right now currently the world has started with another system of making an account, which is called IFRS, that is International Financial Reporting System. So basically IAS और IFRS में क्या फर्क हुआ? IAS और IFRS में फर्क ये हुआ कि IAS सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यानी कि इंडिया में जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हम इस स्टैंडर्ड्स को या इस नॉर्म्स को यूज करके बना रहे हैं। मगर जब हम बात करते हैं IFRS, तो entire companies or entire firms which are operating in the globe or in the universe, they are following this system of accounting, IFRS, International Financial Reporting System. तो जब हम इस रिपोर्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारे अकाउंट्स हम किसी भी वर्ल्ड वाइड कंपनी से या वर्ल्ड वाइड फर्म से कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो दिस इनेबल्स अस टू डू कंपैरिजन विद एनी अदर फर्म or working in any other continent of the globe, right? So this is what it is. So what I was saying is कि आप बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट अपना जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो आर्ट मीन्स इट गिव्स यू a point, a scope for modification or creativity. Similarly, like science, accounting also has a body of knowledge, right? Second point is recording of financial transaction only. This is our second characteristic. So जैसा मैंने आपको ये point पहले भी बताया था कि जैसा हमने प्रोसेस में पढ़ा या साइकिल में पढ़ा अकाउंटिंग के, वही पॉइंट है ये रिपीटेशन में, that in accounts we are going to record only the transactions which are of financial nature. That means any transaction in which our money or money related aspect is not getting used, we are not going to record it. So this is our second characteristic. Third is recording in terms of money. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने लैंड खरीदी 1 एकड़ की 1 करोड़ रुपीस में, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन आवर बुक्स is 1 crore rupees. That means we are going to record the monetary aspect of the transaction. That means we will be recording only the money, right? आपने 1 एकड़ लैंड जो खरीदी है, वो डिटेल्स है, वो आप अपने अकाउंट्स के वर्किंग नोट में शो करेंगे that you have purchased 1 एकड़ land for 1 crore. But what is going to be shown in your account is land and 1 crore. That's it, right? Next is classifying. जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ that classification is done based on the we have missed out on recording in terms of money. So recording मैंने आपको already बता दी that recording is to be taken care of in journal. Then after recording we are going to take care of the classifying. So classification is the transaction which are grouped based on their nature, and this we do in ledger accounts, right? Then summarizing. So summarizing we are going to do in trial balance, which is a summary statement which we prepare after preparing ledger. जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे, जर्नल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. We cannot switch between the steps of the process before completing the one step, because जब आप जर्नल बना लेते हैं तभी आप लेजर बना पाएंगे. और जब आप लेजर बनाकर उसका नेट इफेक्ट यानी कि जो उसका नेट रिजल्ट है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तभी आप उससे ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, नॉट बिफोर दैट, राइट? सो इट इज important that we understand. So classifying, just I said just before in the accounting cycle we discussed that we are going to prepare ledger for classification. Then in summarizing we are going to use trial balance. Interpretation, for interpretation we are going to make final accounts, and then we are going to apply tools on it so as to draw the conclusion of that final account which we have made. So final account, again I am repeating, this is going to include trading account, profit and loss account and balance sheet,
and this is what we are going to study in our syllabus for 11th class. And last is communication. So communication is to the whatever is the result of the organization of my business during an year, it is required to be communicated to the parties interested. That means who all are interested in knowing, or whosoever is interested in knowing the information related to my business should be informed by communicating this financial account to them. And this we are going to communicate by publishing it on our website, by publishing it in the newspaper, or by using any other medium of publishing like annual report or something, right? So this is the meaning of accounting that we have covered today. Then we have covered the accounting cycle, and we have also covered the characteristic of accounting. Anybody, any doubt, please unmute yourself and ask your doubt, or you can also write in the chat box any doubt to anyone. Okay, let me wait for some time. Meanwhile, you can always write your doubt, or you can unmute yourself and you can ask the doubt. Can you just explain fourth and fifth point again? Yes, I'll surely explain. Fourth point is saying classifying. So classifying means that whatever data, whatever financial transactions that you have recorded in the books of original entry, which is the third point, which is journal. Now, in the fourth point, that is while preparing ledger. So now ledger is basically the account, right? So in ledger account, we are going to prepare, or we are going to classify all the journal entries based on our nature, based on its nature. So जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने जर्नल प्रिपेयर किया डेट वाइज, लाइक 11th को कितनी ट्रांजैक्शन, 12th को कितनी ट्रांजैक्शन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सिमिलरली आप जब हम लेजर बना लेते हैं तो हम अकाउंट बनाते हैं. सो इन अकाउंट we are going to classify it based on its nature. तो अगर कैश से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब एक हेड के अंदर आ जाएगी, एक अकाउंट में आ जाएगी. बैंक से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सब एक अकाउंट में आएगी, राइट? देन हमने जितनी सारी परचेजेस की हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स, so that is going to come in one account. So based on the nature, we are going to divide all the transactions whichever has taken place during the year, and that we do in ledger. So that is called classification. That means grouping of financial transaction already recorded in journal based on their nature. So that is classification. Next is summarizing. So summarizing means आपने कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस की थी, जिसको आपने क्लासिफाई किया और डाला कैश अकाउंट के अंदर, जब आप उसे उसका बाय द एंड ऑफ द ईयर टोटल निकालेंगे, right? That means whether it is resulting into a positive balance or a negative balance, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि कैश तो आप उतना ही स्पेंड कर सकते हैं जितना आपके पास अवेलेबल हो. तो कैश का जो बैलेंस बचेगा आपके पास, वो आपका एंड रिजल्ट होगा, which you are going to post in the trial balance. So trial balance is basically a statement, a summary statement, which is going to show all the balances of the ledger account that has already been made, right? तो जितने सारे आपके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमारे एक क्वेश्चन में लगभग 15 से 20 लेजर अकाउंट्स बनते हैं, तो 20 लेजर अकाउंट्स का बैलेंसेस ट्रांसफर होकर आएगा आपके समरी स्टेटमेंट में, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस. और अच्छी बात यह है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच कर जाता है, राइट? तो ट्रायल बैलेंस, इन ट्रायल बैलेंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड आवर एसेट्स, दैट मींस आवर प्रॉपर्टी. We are going to record our liabilities, that means our obligations. Then we are going to record all our expenses, यानी कि जो जो खर्चे हम कर रहे हैं, all our incomes, यानी कि जो जो मुझको मिल रहा है. So आपका, मैं मान सकती हूँ कि इनकम हम ले सकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में ले कि कमीशन रिसीव किया मैंने, रेंट रिसीव किया, ब्रोकरेज रिसीव की. So this is all my income. So this is all going to be added. So all these items are going to be recorded in the trial balance, and trial balance is going to match itself, right? And which shows its arithmetic accuracy. And when we say arithmetic accuracy, we mean that it is going to show that we have not done any kind of calculation related mistake, right? So this is what trial balance is going to show. Now I've got some doubts, so let me answer those doubts also. Okay, third point मैंने अभी अभी समझा दिया, so I think third point is clear now. We are going to prepare journal based on all the monetary transactions that we have already identified. Okay.
So can you please explain the first point again? First point, accounting is an art as well as science. So accounting is an art as well as science means it's an art because in accounts we have got certain methods of preparing account. तो अकाउंटेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो कौन से मेथड को ऑप्ट करे, राइट? एंड साइंस इसलिए है बिकॉज लाइक साइंस, जैसे साइंस एक की एक डिफाइंड नॉलेज होती है, एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वैसे ही अकाउंटिंग की भी एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको पढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम अकाउंट्स पढ़कर सीखेंगे, राइट? सो दिस इज साइंस एज वेल एज आर्ट. Okay, now there is one more doubt that do we have to do all this in registers? We will be maintaining the register. जब मैं आपको बताऊंगी रजिस्टर में क्या नोट करना है, आप तब से नोट करना शुरू करेंगे. अभी मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे दी है, so you don't need to use the presentation, write the presentation in the register. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस आपको आज का होमवर्क ये है कि जो भी टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, आप NCERT डाउनलोड करके उसी टॉपिक को डिटेल में एक बार फिर से रीड करेंगे. और अगर आपके पास NCERT की जगह DK गोयल डाउनलोड हो जाती है, तो DK गोयल को रेफर करके आप इसी टॉपिक को फिर से रीड करेंगे, so that we are on the same page when we are meeting tomorrow again at the same time. Okay, next point is next doubt that I have received is 12 ma'am, in trial balance net profit or net loss nahi is included? No, net profit या net loss नहीं आता है बच्चे, because मैंने अभी भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस हमारा 5th पॉइंट में बन जाता है, यानी कि इट इज अ 5th स्टेप. और जो हमारा फाइनल अकाउंट बन रहा है जिसमें हमको अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, वो बनाते हैं हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, विच इज ऑन द 6th पॉइंट. तो 5th पॉइंट पहले है, 6th पॉइंट बाद में है, इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस पहले बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस को यूज करके वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इससे हमको पता चलेगा कि फाइनली मेरे पास प्रॉफिट आया या लॉस आया, तो वो ट्रायल बैलेंस में ऑफ कोर्स इंक्लूड नहीं होगा. ओके, can trial balance be ever negative? No, trial balance can never be negative. It will always be on the positive side. और वैसे भी ट्रायल पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ही नहीं है, हम अकाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह डेबिट और क्रेडिट में बात करते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, हम कैसे इसको यूज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, बट हम ये थोड़े दिन बाद करेंगे. अभी हम पहले और सारे टॉपिक्स जो है अकाउंट्स के वो समझेंगे, then we'll come on कि what is positive in accounts and what is negative in accountancy. That means how do we show negative sign in accountancy? Okay, then there's one more doubt. If we have bought 1 acre land for 1 crore rupees, then we will put 1 acre land that we have bought. Where will we put? Okay, 1 acre land जो आपने खरीदी है वो बेसिकली आपके लिए असेट है. तो ये असेट जो शो होता है वो शो होता है बैलेंस शीट के अंदर, मगर बैलेंस शीट तो बहुत बात की बात रही. पहले आप रिकॉर्ड करेंगे इसको जर्नल में. तो जर्नल में यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज अ जर्नल एंट्री दैट यू हैव परचेज्ड अ लैंड. तो नरेशन के अंदर, यानी कि जर्नल एंट्री के ही ठीक साथ आप छोटा सा एक नरेशन लिखते हैं कि जॉन आपका ये लैंड खरीदी गई है, 1 एकड़ लैंड खरीदी गई है, राइट? सो दिस इज बेसिकली द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट? इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी कि हम इसे कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे जब हम आगे अपने अकाउंटेंसी के रूल्स पढ़ेंगे. For today, I am concluding this topic here only because the session is going to time out now. So I would suggest everybody please go through the topics that we have covered today so that I can take up your doubts tomorrow in the class when we are meeting. And any other topic you are not required to write it in the notebook, do it from the book and read it from the slide. No other way, no other point, no other place that you need to write this. Okay, you are there's one more doubt, last doubt let me take. I'm confused about communication. So communication basically means जो भी person, जो भी parties आपकी data को refer करना चाहता है, please provide them the information by publishing your reports in newspaper, right?